Hi guys, so today in our series of lectures on renal system in pediatrics, we are going to discuss hereditary conditions of tubules. You collectively call them renal tubular syndromes. Okay, we are going to discuss this topic with the help of tons of mnemonics, which are going to help you in any type of exam. Okay, so here we go. Let's talk about renal tubular syndromes. Let's talk about 4 common syndromes. First one, you have Fmge syndrome. Then you have Bartter syndrome, Gitelman syndrome, and Liddle syndrome. These syndromes are associated with specific parts of these tubules. Okay, so you have Fmge syndrome associated with proximal convoluted tubule, Bartter syndrome associated with loop of Henle, Gitelman syndrome associated with distal convoluted tubule, and finally you are left with Liddle syndrome and collecting duct. So Liddle syndrome is associated with collecting duct. तो ये हायरार्की याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना है, राइट? Fmge syndrome, proximal convoluted tubule, Bartter syndrome, loop of Henle, then you have Gitelman syndrome associated with distal convoluted tubule, and finally you have Liddle syndrome associated with collecting duct. Let's simplify it further. You have Bartter syndrome associated with loop of Henle, you have Gitelman syndrome associated with distal convoluted tubule, and you have Liddle syndrome associated with collecting duct. Okay, और कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? These are genetic conditions, these are hereditary conditions, and due to some gene defects, there is underproduction of particular channels at particular portion of tubules. Okay, so in case of Bartter syndrome, there is decreased production of sodium, potassium, and chloride channels. In case of Gitelman syndrome, there is decreased production and activity of sodium chloride channels at the level of distal convoluted tubules. You guys must have already studied about the action of diuretics. So these two syndromes, Bartter and Gitelman syndromes, mimic to the action of diuretics. Bartter syndrome is very similar to the action of loop diuretics. Take example of Lasix, that is furosemide. Furosemide acts on loop of Henle, right, and inhibit sodium potassium chloride channels, resulting into loss of these electrolytes along with water, right? And that is the diuretic action of loop diuretics. Similarly, you have sodium chloride channels at the DCT. These are blocked by thiazide diuretics, resulting into loss of sodium chloride and water in urine, resulting into negative water balance of body. Okay, contrary to these, you have Liddle syndrome. Liddle syndrome is due to problem at the level of channel, okay, at the collecting duct. But contrary to these, there will be upregulation of epithelial sodium channels, okay, at the collecting duct, resulting into over reabsorption of sodium, and there will be more of salt and water in blood, increased blood volume and increased BP. Okay, तो तीनों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट, कंपैरेटिव तरीके से. लेट्स गो इनटू डिटेल, राइट. लेट्स यूज मल्टीपल निमोनिक्स, राइट, so that you can simplify things. Let's first discuss Bartter syndrome followed by Gitelman syndrome. Bartter syndrome mimics action of loop diuretics, and Gitelman syndrome at distal convoluted tubules is similar to the action of thiazide diuretics. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. You have Fmge syndrome, Bartter syndrome, Gitelman syndrome, and finally you have Liddle syndrome. Proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and then you have collecting duct. Okay, this is related to sodium, potassium, chloride channels at the loop of Henle, similar to the action of loop diuretics. And then you have Gitelman syndrome related to sodium chloride channels, related to action of thiazide diuretics. इतना काफ़ी simple है. Let's take one by one. First of all, let's discuss Bartter syndrome. Bartter syndrome is autosomal recessive condition due to defect in synthesis of sodium, potassium, chloride channels, resulting into loss of these electrolytes in urine. Okay, not only these electrolytes, even calcium excretion will be increased in urine, and that is hypercalciuria.
and this can predispose to formation of kidney stones. Due to loss of these electrolytes along with water, patient will present as dehydrated in dehydration state, okay? Whereas BP will be normal. BP will be normal due to reactivation of renin-angiotensin-aldosterone system. So Bartter syndrome is an autosomal recessive condition, right? Presenting in infancy, right? Child will present in dehydrated state, right? Other complaints will be failure to thrive. But BP will be normal, okay? Patient will be also having what? Dyselectrolemia and acid-base disbalance. हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया है? This is problem at the level of ascending loop of Henle, problem due to defective synthesis of sodium-potassium chloride channels, right, resulting into loss of various electrolytes along with water, resulting into dehydrated state. Important क्या है? सोडियम लॉस हो रहा है, यहाँ पे सोडियम कम है. क्लोराइड लॉस हो रहा है, क्लोराइड कम है. पोटेशियम लॉस हो रहा है, पोटेशियम कम है. Body will try to conserve sodium, right? So body will try to absorb more of sodium at the distal convoluted tubule and collecting duct and excrete lot of hydrogen ion instead of what? Potassium, because potassium is already low. So there will be excretion of H plus resulting into decreased H plus resulting into alkalosis. Okay. So this condition is hyponatremic, hypochloremic or hypokalemic, hyponatremic, hypokalemic, hypochloremic, alkalosis. वेरी सिंपल. ओके, इतने सारे फीचर्स हैं, सबको हम लोग एक निमोनिक से मेमोराइज करेंगे. देखते हैं वो निमोनिक क्या है. काफ़ी इंटरेस्टिंग निमोनिक है. बार कॉलगल स्टन्स इन लूज ड्रेस. ओके, इंटरेस्टिंग वन. लेट्स सी किस तरीके से निमोनिक हमारी हेल्प करेगा. ओके, बार मीन्स बार्टर सिंड्रोम. वी आर डिस्कसिंग बार्टर सिंड्रोम. और AR यहाँ पे इंडिकेट्स ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन. कॉल इज रिलेटेड टू कैल्सीयूरिया. कैल्सीयूरिया गर्ल से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट? ये निमोनिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गर्ल ऐड किया गया है. स्टन्स कैल्सीयूरिया विल रिजल्ट इनटू स्टोन फॉर्मेशन. स्टोन फॉर्मेशन इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है दिस विल प्रेजेंट इन इन्फेंसी, whereas Gitelman syndrome presents in childhood. Okay, and second thing is treatment is by endomethacin. Why endomethacin? Because in this condition it is usually seen that there is excess of prostaglandins. Loose dress का मतलब हो गया loop diuretics. loop diuretics. Okay, loop diuretic जैसा mechanism of action है. तो हम लोगों ने इस निमोनिक से सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो भी नीडेड है बार्टर सिंड्रोम के बारे में जानने के लिए. Right? Bar gall girl, stunts in loose dress. Bartter syndrome, autosomal recessive. Call means calciuria. Stunts means stone formation. In मतलब infancy, endomethacin. Loose dress का मतलब loop diuretics. Okay? चलते हैं second condition की तरफ. Okay? That is Gitelman syndrome. Gitelman syndrome again autosomal recessive condition due to defect in synthesis of sodium chloride channels resulting into loss of these electrolytes in urine. हम लोगों ने कहा किससे मिमिक करता है? थायजाइड डायरेटिक्स से. थायजाइड डायरेटिक्स में कैल्सीयूरिया नहीं होता बल्कि वो कैल्सीयूरिया प्रिवेंट करता है. बट इंस्टेड ऑफ दैट देयर विल बी लॉस ऑफ मैग्नीशियम इन यूरिन. दिस कैन रिजल्ट इनटू हाइपोमैग्नीसीमिया. ओके, सो देयर विल बी लॉस ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स along with water. So patient will present in dehydrated state, but BP will be normal because of activation of renin-angiotensin-aldosterone system. Right? ये चाइल्डहुड में प्रेजेंट करेगा. बार्टर सिंड्रोम प्रेजेंट्स अर्लियर. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? इन बार्टर सिंड्रोम देयर वाज प्रॉब्लम इन व्हाट? सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स. यहाँ पे प्रॉब्लम किसमें? सोडियम क्लोराइड चैनल सिंथेसिस at the level of distal convoluted tubules. Okay,
So similar to Bartter syndrome, you have problem at the level of DCT due to decreased synthesis of sodium chloride channels. Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, निमोनिक जेंटलमैन लव थाई डिस। जेंटलमैन का ओवरऑल मतलब है जिटलमैन सिंड्रोम, मैन का मतलब टू हैव डिक्रीज मैग्नीशियम, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ मैग्नीशियम के बाद यू हैव लो, सो मैग्नीशियम लेवल विल डिक्रीज। थाई का मतलब थायाजाइड, डिस का मतलब डायूरेटिक्स। ओके, सो जेंटलमैन loves thigh dis. Gentleman is Gitelman syndrome. Okay, man in Gitelman is the level of magnesium which decreases because it is followed by low, and then you have thigh dis. This resembles to the action of thiazide-like diuretics. Very, very simple. Finally, we are left with Liddle syndrome. Okay, all are autosomal recessive. This is autosomal dominant. Okay, and again, one more thing, there is upregulation of sodium channels resulting into increased sodium absorption at the collecting duct, resulting into increased BP. अभी तक BP नॉर्मल था, डिहाइड्रेटेड स्टेट थी, अभी तक चीज़ें ऑटोजोमल रेसेसिव थी, इसमें क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ओके, देयर विल बी हाई BP, वेरी वेरी सिंपल। तो इस पेशेंट में प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया, कलेक्टिंग डक्ट पे। ओके, और अगर हम लोग चाहेंगे इस कंडीशन को ट्रीट करना तो यू विल हैव टू इनहिबिट epithelial sodium channels at collecting duct, and drug of choice should be amyloid. Okay, very very simple. यहाँ पे भी हम लोगों को एक निमोनिक की ज़रूरत पड़ रही है, देख लेते हैं। लिटिल सॉल्ट एडिशन एम्पलीफाइज BP. ओके, हम लोग लिटिल से रिलेट करेंगे लिडिल सिंड्रोम को। सॉल्ट का मतलब सोडियम, ओके, एंड सोडियम इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके, हाइपरनेट्रीमिया। AD का मतलब हो गया ऑटोजोमल डोमिनेंट, एम्पलीफाइज का मतलब हो गया एमिलोराइड, एंड BP विल इंक्रीज इन दिस कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 निमोनिक्स को डिस्कस किया है। तीनों निमोनिक्स ऐसे हैं कि पूरी डिसीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि जिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो उसको सेकेंड्स में सॉल्व कर दो। ओके, सो यू हैव 3 निमोनिक्स टू हेल्प यू आउट ओवर हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर लेफ्ट विथ फैंकनी सिंड्रोम, लेकिन उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोगों ने बात किया बार्टर सिंड्रोम, जिसमें देर इज प्रॉब्लम इन सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स एट द लूप ऑफ इनले। ओके, एंड दिस इज ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन, ट्रीटमेंट इज बाय एंडोमेथासिन। ओके, सिमिलरली यू हैव जिटलमैन सिंड्रोम, प्रॉब्लम इज सोडियम and chloride channels at the level of DCT, autosomal recessive. Okay, दोनों कंडीशंस में क्या मिलने वाला है आपको, एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इन द फॉर्म ऑफ हाइपोनेट्रीमिक, हाइपोकैलिमिक, हाइपोक्लोरीमिक, metabolic alkalosis. Very very simple, and you are left with Liddle syndrome. This is due to increased sodium channels, increased sodium, right, increased BP. Treatment is amyloid, and here BP will be interestingly normal. Very very simple. Now we are left with Fmge syndrome. इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. This is problem resulting in the level of proximal convoluted tubule. You guys know that 80% of filtrate gets reabsorbed at the proximal convoluted tubule. लेकिन अगर यहाँ पे reabsorption इन substances का नहीं हो रहा है, these substances will be excreted in urine, resulting into phosphaturia, glucosuria, amino acid uria, proteinuria, right? Even proximal RTA, that is type 2 RTA, is closely related to what? Proximal convoluted tubule and Fmge syndrome. These are various causes and clinical manifestations. In this case, due to loss of bicarb at the level of proximal convoluted tubule, there will be metabolic acidosis. Okay, rest of the things we will discuss in separate lecture regarding Fmge syndrome. So I hope these mnemonics would have helped you to much extent. Thank you. Bye bye.